नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके एकेडमी इंडिया के चैनल पर। तो आज से हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में दो सर्किट होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और एक मैग्नेटिक सर्किट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फिनोमिना डेवलप होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर, ऑल्टरनेटर, एसी मोटर्स, सारे सिंक्रोनस मोटर्स, ऑल्टरनेटर, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या रोल है, कैसे डेवलप होता है, उसे समझने से पहले हमें मैग्नेटिक सर्किट की कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। मैं ये मान सकता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो सब पता होंगे, जैसे कि ओम्स लॉ, नेटवर्क थियरम, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एटसेट्रा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की शुरुआत करने से पहले हम उसका एक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं यहाँ पर। It is always advantageous to utilize electrical energy since it is cheaper. It can be transmitted easily, controlled, and it is more efficient. The electrical energy is generally generated from natural resources such as water, coal, diesel, wind, atomic energy, etc. From these resources, first mechanical energy is produced by one way or other, and then mechanical energy is converted into electrical energy. तो जैसे कोल है, डीजल है, इन सब से हम पहले मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में हम या तो इंजन को चलाते हैं या टरबाइन को चलाते हैं और उसके साथ ऑल्टरनेटर को कपल कर देते हैं और उस ऑल्टरनेटर से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन सोलर के केस में ऐसा नहीं होता। सोलर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उससे सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। For the utilization of electrical energy, it is again converted into other forms of energy such as mechanical, heat, light. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने के बाद उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप मोटर चला सकते हैं, पंप चला सकते हैं, कंप्रेसर चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, and lighting obviously. It is well known fact that the electrical drives have been universally adopted by the industry due to their inherent advantages. The energy conversion devices are always required at both ends of typical electrical system. The devices or machines which convert mechanical energy into electrical energy and vice versa are called electromechanical energy conversion devices. Next, the operation of all electrical machines such as DC machine, transformer, synchronous machine, induction motor, etc. rely upon their magnetic circuit. The closed path followed by the magnetic line of forces is called magnetic circuit. The operation of all electrical devices, that is transformer, generator, motor, depends upon the magnetism produced by the magnetic circuits.
Therefore, to obtain the required characteristic of these devices, their magnetic circuit have to be designed carefully. In this chapter, we shall focus our attention on the basic fundamentals of magnetic circuit and their application as electromechanical energy conversion devices. Magnetic field and its significance. The region around magnet where its pole exhibit a force of attraction or repulsion is called magnetic field. जहाँ कहीं भी मैग्नेट की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एग्जिबिट होता है या एक्सपीरियंस होता है, उस रीजन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point around the magnet can also be determined by placing a magnetic needle at the point. आगे एक फिगर है, दिखा देते हैं आपको. ये एक मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये जो छोटी छोटी नीडल्स दिखाई दे रही हैं इधर, ये जहाँ पे खाली भाग है वो पॉइंट आउट करती है वेयर इज़ द नॉर्थ पोल. और ये जो सब डॉटेड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, और ये नंबर ऑफ लाइंस से ही डिसाइड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है. द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अराउंड द मैग्नेट can also be determined by placing a magnetic needle at that point. Although magnetic lines of force have no real existence and are purely imaginary, yet their concept is very useful to understand various magnetic effects. It is assumed because of their effects that magnetic lines of force possess the following important properties. ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो दिखाई गई हैं फिगर में, ये मैग्नेटिक लाइंस इमेजिनरी हैं, मतलब ये हमको नहीं दिखाई देती, ये सिर्फ बर्ड्स को दिखाई देती हैं, क्योंकि बर्ड्स की आँखों में एक क्रोमोप्रोटीन पाया जाता है, और उस क्रोमोप्रोटीन पे जब लाइट पड़ती है तो अर्थ से जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, जैसे अर्थ में ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो वो मैग्नेटिक लाइंस सिर्फ बर्ड्स को दिखाई देती हैं. और बर्ड्स की चोंच में नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उस नैनो पार्टिकल्स से बर्ड्स को डायरेक्शन पता चलती है. इसलिए बर्ड्स पूरे दिन घूम फिर के कितनी भी दूर चले जाएं, वो वापस लौट कर अपने घोंसले पे आ जाते हैं. उनके पास कोई मैप नहीं होता. तो ये नैनो पार्टिकल और क्रोमोप्रोटीन की थियरी क्वांटम फिजिक्स से पता चली है. आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज from N pole to S pole outside the magnet, but inside the magnet their direction is from S pole to N pole. They form a closed loop. Their tendency is to follow the least reluctance path. जैसे इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस होता है, वैसे मैग्नेटिज्म में रिलक्टेंस होता है. They act like stretched cords, always trying to shorten themselves. एक खिंची हुई कमान की तरह दिखाई देती हैं.
स्ट्रेच कोड्स, ऑलवेज ट्राइंग टू शॉर्टन देमसेल्स, हमेशा शॉर्ट पाथ से अपने साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, they repel each other when they are parallel and are in same direction. They remain unaffected by non-magnetic material. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे। Now, magnetic circuit and its analysis. The closed path followed by magnetic flux is called a magnetic circuit. A magnetic circuit usually consists of magnetic material having high permeability, as for example iron and soft steel. In this circuit, magnetic flux starts from a point and finishes at the same point after completing its path. ये जो डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया है ये फ्लक्स का पाथ है। The figure 1.2 shows a solenoid having N turns wound on an iron core or ring. When current I ampere is passed through the solenoid, magnetic flux phi Weber is set up in the core. फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। L is equal to mean length of magnetic circuit in meters. A is the area of cross section of the core in meter square. Mu r is the relative permeability of core material. Here flux density in the core material B is equal to phi upon A Weber per meter square. A is the area. Okay. Magnetizing force in the core material H is equal to B upon mu 0 mu r is equal to phi upon A mu 0 mu r ampere turn per meter. Mu 0 is the absolute permeability and mu r is the relative permeability. इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। According to work law, the work done in moving a unit pole around the magnetic circuit or path is equal to ampere turn enclosed by the magnetic circuit. That is H L is equal to Ni और phi upon A mu 0 mu r जो हमने पहले H की वैल्यू देखी थी। Here is H phi upon A mu 0 mu r into L is equal to N into I. N is the number of turns, I is the current passing through the coil और phi is equal to Ni upon ये लेफ्ट साइड वाला नीचे चला जाएगा कंप्लीट टर्म। The above expression reveals that the amount of flux set up in the core is directly proportional to n number of turn I, that is the current, और Ni इसे कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF. It shows that the flux increases if either of two increases and vice versa. Inversely proportional to L upon A mu 0 mu r called reluctance of the magnetic path. In fact, reluctance is opposition offered to the magnetic flux by the magnetic path. The lower the reluctance, the higher will be the flux and vice versa. So flux is equal to MMF upon reluctance. It may be noted that the above expression has a strong resemblance
to Ohm's law for electric current. I is equal to EMF upon resistance. The MMF is analogous to EMF in the electric circuit. Reluctance is analogous to resistance and flux is analogous to current. Because of this similarity, the above expression is sometimes referred to as Ohm's law of magnetic circuit. Now, there are some important terms. One is the magnetic field. The region around a magnet where its pole exhibit a force of attraction or repulsion is called a magnetic field. Next, magnetic flux phi, the amount of magnetic lines. The amount of magnetic lines of force set up in a magnetic circuit is called magnetic flux. Its unit is Weber. It is analogous to electric current I in electric circuit. So magnetic flux phi क्या होता है? The amount of magnetic lines. कितनी magnetic lines नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर होती हैं और the force set up in a magnetic circuit is called magnetic flux. 10 to power 8 number of magnetic lines is called 1 Weber. The magnetic flux density at a point is the flux per unit area at right angles to the flux at that point. It is generally expressed by letter B. Its unit is Weber per meter square or Tesla. That is, B is equal to phi upon A Weber per meter square, Tesla or 1 Tesla. 1 Weber per meter square is equal to 10 to power 4 Weber per सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वो एरिया है, एरिया जो मीटर स्क्वायर में था उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं. नाउ द परमिएबिलिटी. The ability of magnetic material to conduct magnetic lines of forces through it called the permeability of the material. इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कंडक्टिविटी होती है वही मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होती है. इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड म्यू, दैट इज द ग्रीक लेटर. The greater the permeability of the material, the greater its conductivity of the magnetic lines of force and vice versa. The permeability of air or vacuum is the poorest and is represented as mu 0. Mu 0 is equal to 4 pi 10 to power minus 7 Henry per meter. Now, relative permeability. The absolute or actual permeability mu of a magnetic material is much greater than absolute permeability of air mu 0. The relative permeability of a magnetic material is given in comparison with air or vacuum. Hence, the ratio of permeability of material mu to the permeability of air or vacuum, that is mu 0, is called the relative permeability of that material. So mu r is equal to mu upon mu 0 or mu is equal to mu 0 into mu r. Obviously, the relative permeability of air would be mu 0 upon mu 0 is equal to 1. The value of relative permeability of all non-magnetic material is also 1. However, its value is as high as 8000 for soft iron, whereas its value for mu metal, that is iron content is 22% and nickel content is 78%, is as high as 1,20,000. तो सबसे अच्छी परमेबिलिटी म्यू मेटल की होती है.
Next, reluctance. The opposition offered to magnetic flux by a magnetic circuit is called reluctance. Reluctance is analogous to resistance. It depends upon the length, area of the cross section, and permeability of the material that makes up the magnetic circuit. It is measured in ampere turn per Weber. Next, reluctance S is equal to L upon A mu 0 mu R, and it is analogous to resistance in an electric circuit. Next, permeance. It is a measure of ease with which flux can be set up in the material. It is just reciprocal to reluctance of the material and is measured in Weber per ampere turn or Henry. Permeance is equal to 1 upon reluctance A mu 0 mu R upon L, Weber per ampere turn or Henry. It is analogous to conductance in an electrical circuit. Now, reluctivity. It is specific reluctance or analogous to resistivity in the electric circuit. Next, comparison between magnetic and electric circuits. Although magnetic and electric circuits have many points of similarity, but still they are not analogous in all respects. A comparison of two circuits is given below. यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये रेजिस्टेंस शो किया है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है और I करंट इसमें से फ्लो हो रहा है. लेफ्ट साइड में एक मैग्नेटिक सर्किट शो की है और इस मैग्नेटिक सर्किट में ये फ्लक्स है फाई. ये मैग्नेटिक मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है. ये n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कंडक्टर के और इसमें से I करंट पास हो रहा है. ये मैग्नेटिक सर्किट है. ओके. नेक्स्ट, now the similarity in between magnetic circuit and electric circuit. The closed path of magnetic flux is called magnetic circuit. The closed path of electric current is called the electric circuit. Flux is equal to mmf upon reluctance. Current is equal to emf upon resistance. Flux phi in Weber, current I is in ampere. mmf in ampere turn, emf in volt. Reluctance S is equal to L upon A mu ampere turn per Weber. Resistance is R is equal to rho L upon A ohm, or R is equal to 1 upon sigma, that is conductivity, L upon A ohm. Permeance is equal to 1 upon reluctance. Conductance is equal to 1 upon resistance. Permeability mu. Conductivity sigma 1 upon rho. Rho is the resistivity. Reluctivity is proportional to resistivity. Flux density B is equal to phi upon A Weber per meter square, whereas the current density J is equal to I upon A ampere per meter square. Magnetic intensity H is equal to Ni upon L. Electric density is equal to V upon D. Now there are some dissimilarities in between magnetic circuit and electric circuit. The magnetic flux does not flow, but it sets up in the magnetic circuit. Basically, molecular poles are aligned.
The electric current, electrons actually flows in the electric circuit. For magnetic circuit, there is no perfect insulator. It can be set up even in the non-magnetic materials like air, rubber, glass, etc. with reasonable MMF. For electric current, there are large number of perfect insulators like glass, air, rubber, etc. which do not allow it to flow through them under normal condition. The reluctance S of a magnetic circuit is not constant, rather it varies with the value of B. It is because the value of mu r changes considerably with the change in B. The resistance R of an electric circuit is almost constant as its value depends upon the value of rho, which is almost constant. However, the value of rho and R may vary slightly if temperature changes. Once the magnetic flux is set up in the magnetic circuit, no energy is expanded. However, a small amount of energy is required at the start to create flux in the circuit. एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स सेट हो गया किसी मैग्नेटिक सर्किट में तो उसमें एनर्जी एक्सपांसन नहीं होता, छोटे से अमाउंट की एनर्जी से फिर से उसमें फ्लक्स क्रिएट किया जाता है. But in electric circuit, energy is expanded continuously so long as the current flows through an electric circuit. This energy is dissipated in the form of heat. तो आज हमने मैग्नेट या मैग्नेटिक सर्किट को इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ कंपेयर करके ये सब समझ लिया. और थैंक यू फॉर दिस वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझेंगे. नमस्कार.